intergranular level. Okay, in engineering materials, we are primarily going to be, in most of the cases, we are going to be dealing with metals. And we know metallic bonding is the primary mode of bonding in metals, where we are going to have ionic cores, positively charged cores surrounded by a sea of electrons, which is going to act as a gluing agent. In the case of ceramic materials, we are going to have covalent bonding, where the bonds are directional, meaning this molecule is going to be sharing this atom is going to be sharing its electron with this atom. So it is not going to be in any way attracted to this atom. It is going to be attracted to this atom and this atom because it is physically sharing its electrons with those two atoms. Over here, it is non-directional because the electron is free to move about and the electron is negatively charged, so it is going to be attracted by any positively charged ionic core in the vicinity. Then we have ionic ceramic materials like aluminium oxide, sodium chloride, where we are going to have bonding between positive and negatively charged particles. And we know they are going to be brittle because any dislocation or any kind of motion which is going to bring positive in front of positive and negative in front of negative is going to certainly lead a force of repulsion, and that is going to generate a very spontaneous crack. Okay, we've also talked about edge dislocations, which are going to be an extra row of atoms inserted in between two rows, and we know that the application of force is going to move this dislocation and it is going to move it out of the matrix, and it is going to create a step like this, and that is going to remove the dislocation. So dislocations are, when they are going to move, they are going to cause deformation, a resultant deformation. So in effect, if dislocations do not move, they are not going to, they are basically facilitating deformation in materials. Okay, we've also looked into dislocation motion, and we have talked about different types of dislocation. We had the edge dislocation, we had the screw dislocation, which is going to be quantified by a certain vector which is known as the Berger vector. सर डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है? Dislocation means something which is not in its proper place, like that row of atoms. We have a normal row of atoms, and suddenly we encounter an extra row of atoms where it should not be in the first place. There is nothing over here. We have point dislocation where this atom is placed somewhere where it should not be. It is actually disturbing the order of placement of the atoms. So this is a point dislocation. This one would be an edge dislocation, and we also have seen area dislocation. Elastic का मतलब है physically atoms. Elastic में क्या होता है? Elastic में सिर्फ ये space बढ़ेगी, उसके बाद force आपने remove की वो कम हो जाएगी. Physically ये चीज़ क्या हो रही है? जब हम यहाँ पे dislocation कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी row आगे shift होके ultimately क्या होता है? ये इसकी जगह ले लेगा और इधर एक step बन लेगा. This is elastic deformation. Okay, we have also seen that certain planes are going to be having a lower planar density as compared with other planes, and they are going to be those which are going to have a lower planar density, they are going to be preferentially they are going to deform. So these kind of planes which are going to have a lower planar density are going to be known as slip planes, because preferentially they are going to deform, and these planes are going to slip on top of one another rather than those planes which are going to have a higher planar density. They are going to act as stronger planes as compared with those planes which are going to have a lower planar density. So we can identify slip planes based on their planar density.
what is going to happen? This is an actual specimen, a test specimen which has been subjected to loading like this. It is axial loading. We had a cylindrical sample and we were subjecting it to loading. And this happens to be a single crystal. In single crystals, what is going to happen? I have planes in this direction, I have planes in this direction as well. Let us say in this orientation, it is obvious that this plane has a lower planar density as compared with this one or this one. So what is happening over here is that preferentially instead of this plane deforming, it is this plane which is deforming because this is a weaker plane because it has a lower planar density. So what is going to happen? Instead of this force causing deformation in the vertical direction, what is happening is a component of this force is causing a slip between the weaker planes, and that is going to lead to a deformation like this, as you can see over here as well. This is an actual sample which has been deformed. सर अगर कोई चीज़ सिंगल क्रिस्टल है सर अगर कोई चीज़ सिंगल क्रिस्टल है तो उसके अंदर दो तरह की प्लेन्स कैसे हो सकती हैं? जैसे हमने लिया था ये आपका सिंपल, जैसे आपका है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इस प्लेन को देखें, इसके अंदर प्लेनर डेंसिटी ज़्यादा ही होगी और इसमें कम होगी क्योंकि दरमियान में क्या आ रहा है, स्पेस आ रही है। स्पेस आ रही है तो वो स्पेस खुद से जो है वो कुछ भी नहीं है, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इस एरिया को स्ट्रेंथन करे। पर यूनिट एरिया आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेस आ रही है, जबकि यहाँ पे नहीं आ रही। So this plane is going to be, it is going to be stronger as compared to this plane, and as a result, instead of if it is oriented in this direction और मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, इसके बजाय ये इसका जो फोर्स का कंपोनेंट है F cos theta is going to be enough to cause deformation along this plane which is 111 as compared with 100. सर ये स्लिप प्लेन क्या होती है? एक तरह की प्लेन होती है जो बनती है हमारे पास। प्लेन जिसका प्लेनर डेंसिटी कम है वो जल्दी डिफॉर्म होगा, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे स्लिपेज टेकिंग प्लेस। अच्छा। एंड दैट इज गोइंग टू कॉज deformation like this instead of the normal pattern. Normal pattern में क्या होता है, deformation इस तरह होती है, यानी इनिशियली ये इस तरह था और अल्टीमेटली फिर नेकिंग होनी चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि वो स्लिप प्लेन बेसिकली द वीकर प्लेन जो पहले डिफॉर्म हो जाएगी, स्लिप बनेगी। Even in multi-granular components where the overall effect is going to cancel out these slip planes, still when you are going to look at the grains, you can see that in this one, in this grain, the slip plane is in a horizontal direction. In this, it is at an angle around 45 degrees. This one is at an angle around maybe 60 degrees. स्लिप प्लेन फिर ही बनेगी। You can see the different slip planes which have occurred in this sample, but the overall effect is going to be that they are not going to, यहाँ पे अगर एक ग्रेन स्लिप करके इधर जा रहा है, अगला वाला इधर जाएगा, तो क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये स्लिप प्लेन, ये ग्रेन तो इधर डिस्टॉर्ट होना चाहेगा लेकिन अगला वाला रोक देगा, अगला वाला इसको इधर ले जाएगा, इसलिए फिर यहाँ पे तो बेसिकली डेफॉर्मेशन नहीं होगी, नॉर्मल डेफॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली इंडिविजुअल ग्रेन्स जो हैं उनके अंदर फिर भी डिफॉर्मेशन हो, उनके अंदर ये स्लिप प्लेन्स जो हैं वो बनेंगी, इसी तरह की डिफॉर्मेशन होगी क्योंकि दूसरी प्लेन, ये वाला प्लेन है। हाँ, अब वो इधर जाने से इसको रोक देगा, और वो खुद यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, वो दूसरा वहाँ जाने की, दूसरे के साथ टकरा रहे हैं और वो दूसरे को रोक रहे हैं। ओवरऑल फिर ये नॉर्मल ये जो पैटर्न है ये आएगा, ये आपकी यानी कि एक्सियल डेफॉर्मेशन होगी, लैटरल डेफॉर्मेशन होगी और क्या होगा, अल्टीमेटली नेकिंग होगी, जो कि सिंगल क्रिस्टल में नहीं होगी। ये वाला क्या है, यानी कि ये यहाँ पे क्या है,
सबसे ज्यादा है, यानी आपकी जो shear आपका क्या orientation चीज़? which is largest, इसका मतलब ये है कि आपका जो shear की डायरेक्शन के अंदर आपके फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे लग रही हैं। अगर यहाँ पे स्लिप प्लेन इधर होता, उसके ऊपर क्या होता, आपकी shear का जो एंगल है वो ज़्यादा होता सबसे ज़्यादा, इसलिए इसके ऊपर shear stress in the direction of the slip plane would have been largest। वो वाले के अंदर जहाँ पे कि आपका ऐसे ही, यानी ये स्लिप प्लेन है और फोर्स भी पूरी की पूरी आ रही है, पूरी की पूरी आ रही है, दैट मींस के F cos थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू F, कोई कंपोनेंट नहीं लगा, फुल फोर्स उस पे आ रही है, तो shear जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा उस डायरेक्शन के अंदर। इफ द स्लिप प्लेन एंड द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आर गोइंग टू कोइंसाइड विद वन अनदर। shear की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ग्रेन जो है जरूरी नहीं है कि ग्रेन खुद इसकी डायरेक्शन में हो फोर्स, यहाँ पे जो है फोर्स का एक कंपोनेंट लगेगा क्योंकि एक्सिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो मिलेगा, फोर्स इधर लग रही है, यहाँ पे दूसरा वाला ग्रेन जो इसको रोक रहा है यहाँ पे तो वो शेयरिंग करवाएगा। ग्रेन को इंडिविजुअली एट इंटरग्रैनुलर लेवल क्या होगा, शेयरिंग होगी, ऑल्दो दिस इज एन एक्सियल फोर्स एट द कंपोनेंट लेवल, बट ग्रेन के लिए क्योंकि ग्रेन की अपनी एप्लीकेशन जो है फोर्स की वो जरूरी नहीं है, वो सिर्फ एक ग्रेन की रो के थ्रू पास करेगी, बाकी वालों में शेयरिंग होगी। क्यों शेयरिंग होगी, क्योंकि ये सारे ग्रेन्स हैं, ये वाला ग्रेन चले इसके लिए एक्सियल फोर्स है, ये वाला यहाँ पे लगाएगा और इसका रिएक्शन इधर आएगा, ये वाला ग्रेन रोकने की कोशिश करेगा। सो इट इज गोइंग टू बी, अगर मैं इसको हाइपोथेटिकली कहूँ कि दिस इज स्क्वायर, ये क्या होगा, इस तरह करके डेफॉर्मेशन क्यों होगी। अगर इसका स्लिप प्लेन जो है इस ग्रेन का इस डायरेक्शन में होगा तो ये जल्दी यील्ड करेगा, अगर इसका इस डायरेक्शन में नहीं होगा तो क्या होगा, स्लिप प्लेन इधर नहीं है, ये सारी की सारी रो जो है ये स्ट्रॉन्ग रो है, तो इट इज नॉट गोइंग टू यील्ड, क्योंकि इसके ऊपर इसका कोई भी अगर ये 90 डिग्री पर स्लिप प्लेन है तो ये यील्ड उस तरह करेगा नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है फोर्स की बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो फोर्स को जो है सारे के सारे स्ट्रॉन्ग प्लेन और परपेंडिकुलर होगी तो कम होगी, क्योंकि उसको फोर्स को अपनी डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर होगी। अब ये वीक प्लेन तो इधर आ गया, इसको ये वाला फोर्स को डिफॉर्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्लेन चाहिए मिल गया, उसको तो रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी। ओके, normally when we look at a sample under a microscope, we see grains which are more or less, although they are irregularly shaped, but they are the difference between the principal axes, like for example this is the grain, these are the different axes passing through its centroid, that they are going to be, if this is A1, A2, A3, the difference between A1 and A2 is going to be very less, around maybe not more than 20%. These kind of grains are going to be known as uniaxial grains, meaning they are more or less rounded in appearance. If they are elongated in a certain direction, like in this one, so the principal axis along the x-axis is longer as compared with along the y-axis. So these kind of grains are going to lead to anisotropic properties, meaning along this direction there is going to be a different strength as compared with along this direction. क्योंकि उनकी लेंथ डिफरेंट होगी, सो ऐसे Number of grain boundaries that the force is going to encounter, that is going to lead to attenuation of the force. नंबर ज़्यादा, आई थिंक सर ये बात भी है कि कितनी बड़ी ग्रेन बाउंड्रीज हैं। आप देखें लाइक एक्स डायरेक्शन में आप जाएं, ग्रेन बाउंड्रीज बहुत छोटी छोटी हैं, एक्स डायरेक्शन, आई सेड एक्स डायरेक्शन। जब डेफॉर्मेशन होती है ना, डेफॉर्मेशन इधर आएगी, अब स्लिप प्लेन किसी और डायरेक्शन में है, वो इधर जाएगी, फिर इधर कुछ और है, यूं चली जाएगी, यूं जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो डैम्प आउट होगी। डिफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन इंडिविजुअली ग्रेन्स जो है उनमें स्लिप प्लेन्स स्टेप्स बनेंगी। लेकिन वो
अच्छा उसको जो है डैम अच्छा सर, अगर इस तरह से इलोंगेटेड है जिस तरह आपने यहाँ इस डायग्राम में शो किया है, हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन सी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कम है? वाई डायरेक्शन में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एक्स्ट्रा वाई डायरेक्शन में ज़्यादा इसलिए क्योंकि ज़्यादा ग्रेन बाउंड्रीज हैं। अच्छा ठीक, ग्रेन बाउंड्रीज फोर्स के इफेक्ट को ख़त्म कर देती हैं। Okay, this kind of effect can be achieved by rolling it in a certain direction. For example, I am pressing it. If I am pressing a component, I am actually deforming these grains. So along the x-axis, the grains, initially let's say it was this grain. I have applied a compressive force. Now it has become like this. So rolling is going to increase the strength in the y direction as compared to the x direction. Concept देख लेते Okay, so anisotropy is going to result from deformation because the grains are going to get either compressed or elongated in a certain direction. For example, we have a sample like this and we actually hit it against a surface. That is going to cause deformation over here and the grains are going to get compressed in this direction. And that is going to lead to anisotropic properties in the deformed section. Okay, now that we have the concept of deformation and how grain boundaries are going to result in strengthening of the mechanical properties. Now let us see what happens at the grain boundary. At the grain boundary, what is going to happen is we have deformation moving in this direction. At the grain boundary, what is going to happen now? The slip plane has changed. So what is going to happen? This deformation which was moving in the x direction, it has encountered a physical barrier. After that, it has either to move in this direction or it has to encounter planes which are going to have a different kind of strength as compared with this direction. बेसिकली एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो रहा है यहाँ पे. So now the rules say that grain boundaries are going to be barriers to the slippage taking place between the rows or planes of atoms. Barrier is going to strength is going to increase with the increasing angle of misorientation. So when we are going to have grain boundaries, if grain boundaries are like this is going to lead to less strength as compared with if we have grain boundaries like this, oriented at random. This boundary is at some other angle, over here it is at another angle. So these angles are going to lead to dampening effect of the movement of deformation. Force select along the x-line. तो ग्रेन उसमें आप कह रहे हैं प्लेनर डेंसिटी की वजह से एक निकाल के along उससे तो किसी और जगह की वजह से क्योंकि फोर्स इस तरफ है तो किसी और प्लेन के along की बन सकता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कुछ और होगी किसी और तो क्योंकि हमने सिंगल क्रिस्टल में देखा था फोर्स तो इधर लग रही थी लेकिन स्लिप प्लेन की डायरेक्शन में इसने डिफॉर्म किया फोर्स की डायरेक्शन में डिफॉर्म नहीं किया क्योंकि वो स्लिप प्लेन जो था वो इतना वीक था कि इवन उस फोर्स की का एक कंपोनेंट भी दैट वाज इनफ टू कॉज डेफॉर्मेशन इन दैट डायरेक्शन तो ग्रेन भी वही प्लेन के along आपसे क्वेश्चन वाली बात जो थी क्वेश्चन क्या आ सकता है अल्टीमेटली वी नो दैट smaller grains are going to lead to more number of grain boundaries per unit area and that is going to lead to increase in strength. So we have to remember this is a strategy for strengthening. I could ask you what kind of strategy can you apply onto your sample in order to increase the strength of that material. First of all, you have the idea that if we reduce the grain size, we are going to strengthen the material. Sometimes people have the misconception that if we have a single crystal sample, it is going to increase the strength. That is not true. अक्सर बात करते हैं एरोस्पेस कंपोनेंट के अंदर सिंगल क्रिस्टल लगाते हैं क्यों लगाते हैं उसका जवाब आता है जी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी
लेमन की टर्म में ये आ जाता है. It is not the case. We look into why do we use single crystal components for aerospace application. We do not use them just like that. We use them in certain applications, not in every application in aerospace components. And the reason why we use them is not because they increase the strength, it is something else. It is something else which we will discuss in one of the coming units. सर ग्रेड बाउंड्री से ज़्यादा होगी तो हमारा ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी. बाद दफा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या आपको ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है. This is one of the measures in order to increase the strength of the material. We are actually looking at how to strengthen the material. Then another way, another strategy of increasing the strength of the material is solid solutions. डक्टिलिटी उसमें भी कॉम्प्रोमाइज होगी, इसमें भी होगी. कॉम्प्रोमाइज तो होगी लेकिन आपको स्ट्रेंथ चाहिए, डक्टिलिटी बाद दफा नहीं चाहिए होती. आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ ऑटोमोटिव एप्लीकेशन. आपको गाड़ी का जो दरवाजा है वांटेड टू बी स्ट्रॉन्गर. डेंट पड़ेगा या क्रैक होगा, जो भी होगा आपने डेंटर के पास लेके जाना है. यू डू नॉट वांट Non-ductile. even plastic deformation to take place. We That's don't why want it we to are stretch. We strengthening may the need to decrease the components. elasticity. Impurity atoms lead to stresses inside, and those stresses are going to repel any plastic deformation moving through the grain. So let us consider, for example, we have a point defect over here. This point defect is such that we have a smaller atom in place of the normal size matrix inside, and that is going to lead to local stresses. It is basically a local tensile stress. सर ये मैट्रिक्स होता क्या है यहाँ पे? ये अरेंजमेंट है. ये जो आपको ये डब्बे डब्बे नजर आ रहे हैं, बेसिकली डब्बे नहीं है, ये इंटरसेक्शन जो है पोजीशंस ऑफ एटम्स हैं. ये मैं अक्सर डायग्राम के अंदर ये डब्बे बनाता हूँ कि ये ग्रेन है, ये क्रिस्टल है. क्रिस्टल का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन पे एक एटम पड़ा हुआ है. ये डब्बे जो हैं, यहाँ पे एक एटम पड़ा है, यहाँ पे एक एटम पड़ा है. इधर एक एटम होता, उसकी जगह पे आपने बड़े की जगह छोटा एटम रख दिया. छोटा एटम आ गया तो क्या होगा, इधर एक तरह से वैक्यूम क्रिएट हुआ है. नॉर्मली तो इधर बड़ा एटम होता है, ये पूरी पूरी लाइन स्ट्रेट जा रही होती है. लेकिन अब छोटा एटम है तो ये यहाँ पे डिस्टॉर्ट हुई थी बिकॉज़ वी हैव अ काइंड ऑफ वैक्यूम ओवर हियर. तो इस चीज़ की वजह से अगर इधर वैसे ही आपका डिफेक्ट होता है, यानी देयर वुड हैव बीन एन एब्सेंस ऑफ द एटम. उस केस के अंदर भी यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस होता और वैक्यूम होता है. So what is going to happen if we have a dislocation moving in this direction? When there is going to be an extra atom which has been forced over here, it would like to remain in the vacuum area rather than move forward. So that is going to reduce the intensity of the displacement taking place, which is ultimately going to lead to plastic deformation. Similarly, if we have a larger atom in place of the surrounding atoms, that is going to lead to compressive residual stress, and that is going to actually it is going to push away any atoms which are actually moving in this direction due to the application of force under plastic deformation, for example. यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, एक एटम कंप्रेस पिछली साइड से फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से इधर मूव करना चाह रहा है. इधर ऑलरेडी एक कंप्रेसिव स्ट्रेस है, दैट इज पुशिंग दोज एटम्स बैक, एंड दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द मोशन ऑफ डेफॉर्मेशन फ्रॉम टेकिंग प्लेस इन दिस डायरेक्शन. इसलिए स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ. सर इसमें पिछला वाला वो सर आप इसमें करें वो सब्स्टिट्यूशन वाला. बेसिकली सर ये जो दोनों एटम्स है, ये एक इम्प्योरिटी हमने खुद ब खुद से ऐड किया है. अब सर वो इम्प्योरिटी एक तरह से हम खुद ही डालते हैं, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर हम जो भी एटम डालेंगे एग्जैक्टली उस साइज का नहीं होगा, या छोटा ठीक होगा या बड़ा है, होगा. ठीक है. अगर वो इस तरह से छोटा है तो फिर आप क्या कह रहे हैं? तब भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बड़ा है तब भी. अच्छा, स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रही है? डिफॉर्मेशन किस तरह रुक रही है यहाँ पे? इसलिए कि यहाँ पे अंदर
change in आपके जो है stresses, that is going to prevent the smooth movement of deformation from taking place. अच्छा, अब ये वो तो नहीं है सर जैसा एलाइज में होता है कि लाइक लेयर्स कैन नॉट स्लाइड हाइड बिकॉज यानी कि दरमियान में एक एटम होता है। अच्छा, ये एक डिफरेंट रेडियाई का बड़ा है तो वो प्रिवेंट कर रहा है उसको टूटने से। तो सर वो बड़ा वाला एटम वो क्या कर रहा है? ये जो है वो वहाँ पे instead of टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस है, वो पहले ही इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है, उधर से एटम डिफॉर्म होकर आगे की तरफ आना चाह रहे हैं, वो वापस पीछे भी धक्का दे रहा है उसको। बेसिकली एटम के सामने एक बैरियर की तरह बन गई है। समझ गया सर। Are we clear about this? How impurity atoms are going to prevent plastic deformation from passing through the Then we have dislocations. Dislocations are also going to generate stresses. Over here we have an extra row which is going to create compressive stress. Over here we have missing, you can say a missing row which is going to cause a tensile stress. Both of them are going to prevent the motion of plastic deformation from passing through these areas. What alloying is going to do is, alloying is going to introduce atoms of different sizes into the normal structure. For example, in the case of iron, in iron we have an atom, let us say copper. Copper is maybe slightly smaller than iron. So what is going to happen? It has created a tensile stress over here. Plus, over here instead of iron atoms, which would have been accommodated over here, and they would have actually led to a greater amount of stress. Now we have 3 copper atoms. So when we are going to try to deform this, these 3 atoms are already comfortably located in this space. So it is going to prevent deformation from moving in this direction, because that is going to disturb the place of the 3 copper atoms which are smaller, and they have occupied this space which would have generated a compressive stress over here and a tensile stress over here. So they are at a very comfortable zone. They would not like to move and dislocate from this position. So that is going to prevent any plastic deformation from taking place in this kind of system. Then we have larger atoms, for example, iron and nickel. Nickel is slightly larger than iron, so that is going to occupy the opposite side. यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस था, स्पेस ज़्यादा थी, इसमें बड़े एटम्स प्रेफरेंशियली यहाँ पे आ जाएंगे, और जब आ जाएंगे दे वुड बी वेरी कंफर्टेबल इन दिस एरिया। अब इसको डिफॉर्म करेंगे, डिफॉर्म करने की वजह से डिसलोकेशन इधर आ जाएगी, ये फिर वापस छोटी जगह पे स्क्वीज हो रहे होंगे, जो कि वो नहीं चाहेंगे। दे वुड एक्चुअली लाइक टू मूव बैक इनटू द स्पेस, द लार्जर स्पेस, and that is there. In effect, these 2 atoms are going to push back that plastic deformation, so that they are already in the comfort zone. So they would like to remain in their comfort zone. So they are going to actually resist the motion of plastic deformation from passing through this zone. low density sites से आपका क्या होता है? अच्छा, ये आपकी जो dislocation है, इसमें देखें तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स्ट्रा रो आई हुई है, डेंसिटी बढ़ती है, इधर कम है। कम होने की वजह से ये वाली जो जगह है, यहाँ पे देखें तो ये स्पेस बढ़ी हुई है इन वालों की, और इसकी स्पेस कम हुई हुई है। अब अगर मैं छोटे एटम यहाँ पे डाल दूंगा तो ये स्ट्रेस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, वो कंफर्टेबली इस जगह पे प्लेस हो जाएंगे। इसी तरह बड़े एटम होंगे तो वो इधर जब आ जाएंगे तो इसको स्ट्रेस को कम कर देंगे। अब यहाँ पे अब मैं इसको अगर डिफॉर्म करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, ये वाले एटम जो है, छोटे वाले एटम जो है वो फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, और ये डिसलोकेशन आगे चली जाएगी इस जगह पर। दैट वुड क्रिएट अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस। तो क्या होगा, ये वाले एटम जब यहाँ पे छोटे एटम बड़े एटम छोटी जगह पे आ जाएंगे, या छोटे एटम बड़ी जगह पे आ जाएंगे, तो क्या होगा, वो वापस उसको अपनी जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। सो दे आर गोइंग टू अपोज द मोशन ऑफ प्लास्टिक डेफॉर्मेशन फ्रॉम टेकिंग। आर वी क्लियर अबाउट दिस? Okay, this was at the atomic level. So what is going to happen when we are going to have, what is going to happen at the engineering level? At the engineering level, we are going to see something like this.
When we are going to add nickel inside iron, what is going to happen? The tensile strength initially of 100% pure iron was around slightly more than 200. When we are going to increase the concentration of nickel, we have actually increased the tensile strength as well as the yield strength of the pure sample. So the empirical result is going to look something like this. This is an empirical relationship for this particular curve, because you can see this is going to look like a quadratic curve. Otherwise, you have to actually look at it from case to case basis. Okay, we'll stop over here and we'll continue with the fourth. No sir, continue sir, please. Next time. Sir, please continue. सर पढ़ा दे सर आपने ही जाके कहा है। ये इसी की वजह से होता है।